Good morning, all of you. Ashok Kumar Misra. Today, going to continue with the Standard 8 revision of Chapter 5. More on Photoshop CC. Photoshop CC के अंदर कुछ नया कुछ क्या है वो देखेंगे. तो सबसे पहले इस बात पर एक बार पुनः चर्चा हो कि Adobe Photoshop क्या है. Adobe Photoshop is basically used for retouching and editing the photographs to make them look attractive and appealing. कोई भी फोटो का लुक अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बनाने के लिए हम लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं. इसके माध्यम से हमारा फोटो का रिटचिंग होगा और एडिटिंग होगा. इसके अंदर टूल्स हैं ब्रश टूल्स, हिस्ट्री टूल्स, ग्रेडियंट टूल्स. तो ब्रश टूल्स एक टूल्स है जिसका इस्तेमाल हम स्मूथ स्ट्रोक्स फॉर फॉरग्राउंड कलर में करेंगे इमेज में. इसके साथ ही बहुत सारे ऑप्शन हैं. इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव रूप में इस प्रकार होगा कि ब्रश कैन बी अप टू 5000 पिक्सल वाइड एंड press the caps lock key if you want to see the brush size. Adobe Photoshop is available in 29 language. जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Adobe Photoshop कितने लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आंसर होगा 29. उसके बाद पाथ एंड शेप टूल्स आर आल्सो termed as drawing tools because they help in making complex shape and drawing. Eraser tools is used to erase pixel and change them to either the background color or transparent color. And those tools is used to lighten the area of an image, whereas burn tools is used to darken the area of an image. The red eye tools remove the red reflection caused by an flash while clicking the photograph. Rotate view tools is used to rotate the canvas non-destructively. A sponge tools is used to distort or saturate a part of image. Control plus, use control or plus to zoom in and control minus sign to zoom out, है ना. इसके बाद है नोट टूल्स यूज टू मेक नोट एंड अटैच्ड टू एन इमेज. रूलर टूल्स यूज टू मेजर द डिस्टेंस एंड एंगल इन एन इमेज. एंड यू कैन क्रिएट ए न्यू लेयर बाय यूजिंग द शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन की कॉम्बिनेशंस. अब फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स से भी जो क्वेश्चंस होगा वो भी एमसीक्यू बेस्ड से ही होगा. जैसे एडोब फोटोशॉप इज बेसिकली यूज्ड फॉर डैश एंड डैश फोटोग्राफ्स, तो retouching and editing. Dash tools allow you to paint in a more realistic way by mixer color on the canvas, combining color on a brush and verifying paint wetness across the stroke. Answer is mixer brush. Press caps lock key if you want to see the brush size, and by default foreground color is black and background color is white. The color replacement tools replace the existing color in an image with the foreground color. And patch tools is used to select the unwanted element from an image and replace them in different surrounding. There are two types of the navigation, hand and zoom. Now, true false. Wrapping text is used to position the letter or the text in different shape is true. Text tool used to add the text to an image is false. And a brush can be up to 2500 pixel wide is false. The content aware tools move any part of an picture to another area of shifting by to another layer is true. The zoom tools let you see the magnified view of picture is true. And path tools help in making complex shape and drawing is true. And a spot healing brush tools used to repair the imperfection is true. Now MCQ. Which key is present on the keyboard to define the source point while using the healing brush tools is Alt key. Which key help you to move the image while image is zoomed in? Space bar key.
Which tools is used to create a smooth stroke of the foreground color is brush tools. And which options is used to position the letter or the text in the different shape is create wrap text. Which tools is used to move the zoom picture within the windows is hand tools. During the image adjustment, which option is used to change the intensity of the color of an image is color setting. So these are the MCQ and true false of these questions. Thank you. Next day I will also revise the chapter 1 again. Thank you. Have a nice day.